Okay, upon startable. Okay. Okay, sir. Give me 1 minute, everyone. I will be setting up a little bit and I'll be back, okay? Okay. Good evening, everybody. I hope you are all doing fine and your preparation is going well. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ voice ଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? Yes, ma'am. କିଛି crack ହଉନି ତ? ଠିକ ଅଛି? ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ତ ଆମେ ଆଜି ଆର୍.କେ. ମର୍ଟନ ରୋବର୍ଟ କେ ମର୍ଟନର ରିଭିଜନ କରିବା। ଓକେ ତ ଯେହେତୁ ଏଟା ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ମଝି ମଝିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି। ଓକେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ତମେ ରିକଲ୍ କରିକି ଯାହା ବି ସେ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ତମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛ ସେଟା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ गिव आंसर इन टुडेज क्लास। ओके द मोर यू विल रिकॉल द मोर बेटर all the things concept will store in your memory। तो आंसर देवा पाई चेष्टा करिवो। मिस्टेक हेले चलिवो, इट इज फाइन। मेक मिस्टेक्स हियर, डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन योर एग्जाम्स। तो क्वेश्चन पचरिबी आ तमे आंसर देवा चेष्टा करिवो। आ हमें की कॉन्सेप्ट्स रु स्टार्ट करिवा। ओके एज इट इज अ रिवीजन क्लास we will focus on the key concepts of Merton जोटा कि तमे टॉप ऑफ द माइंड रे सबु तमे मने रखिबा दरकार। the concept which are non negotiable from this topic। okay तो हमें सेट्रू स्टार्ट करिवा। लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल होची समस्तंकु? Okay, madam. okay so we'll start with रोबर्ट के मर्टन। तुम ऑलरेडी पढ़ीचो राइट। से तांकर इंपोर्टेंट थ्योरीज हला कोन एनोमी विषय से कहिथिले। प्रथम एनोमी विषय कहिथिले डरखाइन, किंतु से भी तांकर पॉइंट ऑफ व्यू देले एनोमी विषय। आ तापरे तांकर नोटेबल वर्क रे तमे रोल मॉडल विषय से थ्योरी देथिले। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी विषय से कहिथिले एंड द मेजर वन ऑफ व्हिच आर योर रेफरेंस ग्रुप। तापरे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन एडा सब से थ्योरीज देइचंती। तांकर सबुठु इंपोर्टेंट बुक जोड़ा तमे मने रखिबाटा बाध्य, दैट इज सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर विथ ईयर 1949। सबुठु इंपोर्टेंट बुक तांकर। ओके सो रोबर्ट के मर्टन वाज ए structural functionalist। yes or no? different school of thoughts are there in sociology। कि conflict theorist, कि functionalist, कि neo marxist या फिर neo functionalist। so सेमती अलग अलग कैटेगरी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट अच्छी। ओके सो आर.के. मर्टन स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऊपर से बिलीव करंती। ये कहि पारिबो व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म माने कोन? Structural functionalism माने society इंटर कनेक्टेड भी अच्छी देन फंक्शन भी करूची मींस सॉलिडारिटी भी अच्छी। ओके तो एग्जांपल दे पारो गोटे तो मर्टन ही जिवे आउ के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट आइडिया को बिलोंग करंती आउ केते? पासन यस टैलकॉट पार्सन। आउ एनीबॉडी एल्स आउ के दे पारिबो एग्जांपल? वेरी गुड डरखाइन। ओके सो देखो स्टार्टिंग रू बिफोर वी प्रोसीड मोर इनटू द टॉपिक तमे सबु जेतकी भी थिंकर्स तम सिलेबस रे दिया हिची तांको रिलेटेड केतेटा कीवर्ड्स जेंति कि कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स रिलेटेड की वर्ड हिजिबो कोन कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल कैपिटलिज्म ओके तांकर मेन आइडिया जहाँ भी से थ्योरी देचंते तार मेन आइडिया कहा ऊपर बेस्ड है के से थ्योरी बने जंती दैट इज व्हाट द कीवर्ड्स आर आ तापर डरखाइम रे हंती तमरे जो सॉलिडारिटी तापरे तमरो social solidarity collective effervescence these are the main ideas of Durkheim तो structural functionalist रे तमे देखिबो टैलकट पार्सन Durkheim and Merton that we are going to study right so structural functionalism रे कोन कहा जाउची that society गुटे यूनिट जोटा कि इंटर रिलेटेड पार्ट्स रे बनाइची जेन तमे कहलो तार अलग अलग पार्ट्स रे बनाइची आ सब पार्ट्स रो किछि गुटे स्पेसिफिक फंक्शन अछि आ जेतले से माने प्रॉपर्ली फंक्शन करिवे देन सोसाइटी रो ओवरऑल स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर टा मेंटेन हे कि रहबो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जेंति कि हम ह्यूमन बॉडी रो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अछि और अलग अलग ऑर्गन अछि सब ऑर्गन सब बॉडी पार्ट रो गुटे फंक्शन अछि जेतले से माने सब बॉडी पार्ट गुटे कोहेसिवली फंक्शन करिवे देन हमर बॉडी रो फंक्शन प्रॉपर्ली हबो सेमती स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी गुटे सोसाइटी को से वे रे देखुची different parts interrelated parts function together and they continue the overall social structure okay so same idea is something that Merton also believe Merton भी ए idea ऊपर believe करूथिले Merton रो केतेटा की concept जंती कहली हमें देखिबा okay some key concepts of Merton key concepts रे कोन आसीबो एनोमी तापरे conformity deviance and reference group okay these are the very important concepts given by Merton that is also important for your exam perspective ହେଲା तो what is anomy can you explain what is anomy anomy माने कोन बुझुचो Anomy means normlessness. normlessness in the society Okay. okay Okay. yes ଆଉ କିଛି further ତମ explain କରିବ मैडम एटा गोटे ट्रांजिशन फेज माने हम्म, जोथरे किछि सोसाइटल वैल्यूज की किछि डिफाइन नथिबो कि व्हिच इज राइट व्हिच इज रॉन्ग सेमथिया टाइप ऑफ okay ଆଉ anomy society रे केमती arise हुए absence of laws, rules, regulations. okay fine anomy रो concept first के Durkheim देथिले से what टा को to derive हिची anomy रो word को word रो derive हिची anomy I don't the word anomy is derived from which word को to derive हिची anomy yes anyone Durkheim देथिले ना तो से को word रो से anomy word टा देथिले Abnormal. Logical. anomic. Anonymous. Jana- No, we don't know. acha let me tell you this anomy word the word anomy comes from a Greek word nomos okay nomos ର meaning कोन होची without any Not- norms नॉट without any rules and regulation okay that is what anomy word has come from ଆଉ ଏଟା Durkheim ତାଙ୍କ को बुक रे देथिले बुक रो ना कोन Division of labor. yes very good absolutely correct the division of labor in society सेटा पब्लिश हिथिला तमरो 1893 रे राइट तो से बुक रे Durkheim में कांसेप्ट एनोमी रो कांसेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही गेव इट देयर तो एनोमी व्हाट इज एनोमी एनोमी इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस एनोमी तमरो जेतले सोसाइटी रे बिल्कुल
रूल्स एंड रेगुलेशन भल से फॉलो हेबोनी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन भल से मेंशन करा जाइनी, that can also cause enemy. And also when there is strict rule follow करेले भी तुम सोसाइटी रे एनोमी हेबो। आ जने जंती कहिले एनोमी गुटे ट्रांजिशन पीरियड को भी कहा जाए, स्टेट ऑफ एनोमी। सो सिंपल वर्ड्स, एनोमी मींस द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। आमे ऊपर एटा सब कांसेप्ट डिस्कशन करबा। ओके, तापर आमे डिफरेंस देखिबा बिटवीन द आइडिया ऑफ एनोमी ऑफ डकहाइम एंड आल्सो ऑफ मर्टन। तो एटा हेगला फर्स्ट की कांसेप्ट व्हिच इज एनोमी। एनोमी refers to a state of normlessness where societal norms become unclear or disregarded, leading to confusion and instability among the individuals of society. Next होची conformity. What is conformity? जे कि सोसाइटर नॉर्म्स अदर रूल्स रेगुलेशंस द्वारा निज माने परिचालित करे। Okay, absolutely correct. आगे कहबो। Anyone? Ma'am, following the Yes. regulations Mhm. in letter and Sorry. following the norms and rules and regulations of the society in letter and spirit. We will call Okay. them Call them conformist. conformist, right? So conformity is what? The act of matching attitude, beliefs and behavior to social norms and expectation, often driven by a desire for acceptance or belonging in the society. माने society जो जिनसों को कहूची that this is appropriate, you should do this, then that is known as conformity. Conformity रो बहुत example ही परिवो, right? Yes. माने within the boundary set by the society. Yes, absolutely. Within the boundary set by the society. माने society से benchmark टे create करिवो। तमे जदि एमिति behave करूचो या फिर एमिति तमरो role performance करूचो की action नूचो, then this is correct, right? तो conformity रो बहुत example हमें जानिचु, right? For example, simplest example, if you are someone mostly belonging to the Asian countries, you will see that we put our shoes outside the home. That is our normal behavior, right? This expected behavior from every individual of the society. नहले तमे जदि elderly को देखुचो ताहले गोड़ छुईंकी नमस्कार करिवो. That is the conformity or the expected behavior from the society. That is known as conformity. तार opposite रो कोन आइजो? Deviance. Deviance माने कोन? Ma'am, any behavior or belief that violates the society's norm, Any behavior or belief that violates the norms of the society's society. norms. Absolutely correct. So deviance involves actions or behaviors that violate societal norms, which can be perceived positively or negatively depending on the context and the society's values. Important here is deviant behavior. केतेडा सोसाइटी रे पॉजिटिव भी हे परिबो, केतेडा सोसाइटी रे नेगेटिव हे परिबो, सेडा तमरो सोसाइटी रो वैल्यूज ऊपर डिपेंड करछि, कॉन्टेक्स्ट ऊपर डिपेंड करछि। किछि उडे एग्जांपल दे परिबो? A behavior in one society it is considered as positive, but in another society it will be considered as deviant. Polygamy. Polygamy. अच्छा elaborate करो ठीक है कंती? In India, we can consider in Hinduism or Hindu act, it is considered a deviant act under the law, but in Shariat law, it is normal for them. Okay. Correct. According to Sharia laws, it is fine to have more than one wife, right? For example, if eating beef is considered immoral in a Hindu religion, but it is normal in other religions, Muslim or Islamic religion. Okay. Non-vegetarian food items. केतेडा society रे सेटा कोन impure या फिर deviant हिसाब रे देखा जाउची केतेडा society रे it is completely fine, completely normal. All right. Ma'am, Yes. presence case रे तो एटा भी देखियो बना जमते इंडिया रे लिव इन टा डेवियंस रे किंतु foreign society रे it is very normal. Yes, absolutely. Very recent example, modern example. Correct. सेटा भी पारिबो live in relationship. Out deviant रा
जदि प्रॉपर डेविएंट रो एग्जांपल देबी ताहले we can say same sex marriages or same sex relationship, something which is still not accepted by the society at large, सेटा वेस्टर्न सोसाइटी हो इंडियन सोसाइटी हो, राइट. सेम सेक्स मैरिजेस हो कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को एबे भी गोटे पॉजिटिव लाइट रे देखा जायनी, तो दैट बिहेवियर कैन बी कंसीडर एज डेविएंट इन द सोसाइटी, राइट. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेविएंस. देन नेक्स्ट वन इज यस मैम सिंपल गोटे आसला माइंड की एबे आमे पढ़िथिले कि जो ट्राइबल एरियाज रे पॉलिएंड्री गोटे अछि सिस्टम, तो आमर एपटे माने नाही आमर नॉर्मल रे, तो एटा भी गोटे एज एग्जांपल एपर तांको पई पॉजिटिव आम पई नेगेटिव. यस सेटा भी पारिबो. पॉलिएंड्री बहुत लिमिटेड, ऑब्वियसली लिमिटेड ट्राइबल कम्युनिटीज रेडा देखा जाए, बट पॉलिएंड्री जो जो जगह रे फॉलो होची दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल फॉर देम, और जो जगह रे होनी दैट इज वेरी एबनॉर्मल फॉर देम, राइट, डेविएंट फॉर देम. एग्जैक्टली. So this is all about anomy, conformity, deviance. Last important one is reference group. What is reference group? डिफरेंस ग्रुप आर दोज माने ग्रुप्स आमे चाहेबु तांको बळे हबा पई, माने आमे भी तांको बळे इमिटेट करिवु, एक्ट करिवु. Okay, fine. So reference group are the groups or the social groups that individual use as a standard for evaluating their own behavior and attitude, significantly influencing self-perception and social identity. Reference group as a OPSC aspirant, your reference group can be the civil services officers who are already serving in the office, right? They are your reference group. And there are reference individuals as well. तमरो सेटा तो ग्रुप ही गले, सिविल सर्विसेस ऑफिसर रो ग्रुप तमे तमरो रेफरेंस ग्रुप हिसाब रे कंसीडर करजो. रेफरेंस इंडिविजुअल्स आर आल्सो देयर. रेफरेंस इंडिविजुअल्स माने तमे किछि स्पोर्ट्स पर्सन या कोनोसी सेलिब्रिटी को किंबा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को या फिर तम निजर फैमिली मेंबर्स काहा को तमे जदी गोटे से बेंचमार्क सेट करूचो कि मु तांको भलिया हेबाकू चाहूची, so they can also act as a reference individual. Then ki tomorrow somebody wants to become like their father or their mother or their brother or their grandfather or their grandmother, so their father, mother, grandfather, they also are serving as reference individuals. Group re seta tomorrow groups at large tome kahaku consider korcho, kaharo tome aspire korucho to be the part of their group, that is the reference group. Okay, so this is the overview we have taken. Now we will enter into the main topic. Okay, so first I may start kariba with manifest functions and latent functions. Okay, so what is manifest function according to Robert K. Merton? Manifest function mane kono? Already given in the slide, but you can add yours. The function that is actually intended. That is ଯଦି ଆମେ କିଛି intended. ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ ଫଙ୍କସନ ସେଟା ହଉଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ. Absolutely. Example ଦେଇ ପାରିବ? ସପୋଜ ମ୍ୟାମ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ର ତାଙ୍କର ପଢେଇବା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ କାମ, ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ କାମ ଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢେଇବା. Okay, fine. So manifest function is what? Intended function. Okay, let me show you here. Okay, so manifest functions refer to the intended and easily recognized outcomes of social action or structure. For example, the manifest function of education jenti tome कहलो is to provide knowledge and skills to student which directly prepares them for workplace. हला सेंती तमरा religion रो भी केतेडा intended function होची, जंती कोन हबो religion रो spiritual guidance देबा, right? Religion रो हबो spiritual guidance. किंबा तमरो सोसाइटी रो मेंबर्स भितरे मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इंस्टिल करबाटा, किंबा तमरो सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस भी तमरो रिलीजन करबा पई हेल्प करूची, राइट? दैट इज द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजन. आउ तापरे आउ जदि रैंडम किछु एग्जांपल देबी ताले ट्रैफिक रूल्स रो मेन
objective kono hochi to regulate the flow of the vehicles, right? So these are the manifest functions, intended and easily recognized. Tomorrow intent tome seta consciously and knowingly you are wanting or expecting that outcomes from a action, right? Then latent function. What is latent function? The opposite. The opposite. Janti? ଯେମିତି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଦେଇ ହବ Kono? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ କହିଲେ ହବ Yes, yes, absolutely. ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗ୍ରୀନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ସେମିତି ତାର ଯଦି ଲାଟେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଗ୍ରେରିୟନ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିବା ରାଇଜ ଇନ୍ ଇନକମ୍ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିପାରିବା ସେଟା ଗୁଡାକ ଲାଟେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ରେ କାଉଣ୍ଟ କରିହବ Okay, absolutely correct. Mane latent function kono hochi? Hidden. Latent mane what? Simply latent means hidden. So these are the unintended and not immediately obvious functions. These may include socialization processes, networking opportunities, and the development of social cohesion through educational system, which are not primary purpose of education, but still play a significant role. जेमती कि education रो आमे देखला तारो primary purpose कोनो to prepare the students with skill and so that they can contribute in the workforce. तारो education रो latent function टा कोनो हिजबो? ତାର ଆମେ ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହବ ଆମେ ଶିଖୁ values ଶିଖୁ norms ଶିଖୁ socialization exactly Yes, I mean, we equality. socialize there. Most importantly through our peer groups, right? तो हमें friendship build करूचु सेठी. तापर हमें student teacher relation establish करूचु, right? So we are socializing there. So this is the latent function. जेमती तमे गुटे बहुत बड़ी example देलो green revolution रो सेटा भी गुटे example ले जिवो. Okay, so this is the manifest function and latent function given by R.K. Merton. तापरे एटिरो आमे next जिबा important which is again will stretch towards conformity and deviant. आमे conformity और deviant को in depth टिके discussion करिबा. Conformity और deviant रो जो theory आउ एटा तमरो latent and manifest function रो theory तमरो Merton को book रे दिथिले. Can anyone say the name of the book? Social theory and social structure. Absolutely correct. एटा मने रखितो जेंति कहली first beginning रे ही कहिछु मु social theory and social structure एटा मने रखितो सब थिंकर तांकर prominent work सेटा मने रखिबो आउ ताकू तमरो आंसर रे भी इंक्लूड करबा को चेष्टा करबो. It will help you to score some brownie points. मैम सेटा कोन कि तम सोशियोलॉजी रे मैम डिफिकल्ट होची त इयर्स कुरा मन रखियो डिफिकल्ट होची सेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तमे रिपीटेडली यूज करले तमरो मने रहि जिवो. ओके तमे किछि न्यूमेरिक्स सेंटा यूज करि के चेष्टा करो मने रखिबा पई. मैम से जो इयर्स तांको इयर गुरा माने हां इयर सेटा तो होची सेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमको धीरे धीरे मने रहि जिवो. बेस्ट कोन हबो तमे सब बुक्स को इयर वाइज जदी गोटे लिस्ट बनाउचो फर्स्ट रे ए बुक आसिला तापरे ए बुक फर्स्ट तो तमे मने रखिबा पई थिंकर वाइज लिस्ट बनो थरे सेटा मने रहला तापरे इयर वाइज लिस्ट बनी कि मने रखिबा को चेष्टा करो स्टेप बाय स्टेप. दैट इज गोइंग टू वर्क आउट किछु अन्य ऑप्शंस नहीं. ऑलराइट. ओके मैम So social theory and social structure ए बुक रे दिया हिची. So conformity और deviance हमें देखिला सोसाइटी रे conformity कोन deviance कोन. ओके से कहले कि सोसाइटी रे मर्टन कहले कि आमे सोसाइटी रो अछु आम सोसाइटी रे केतेटा रोल अछि. आमे सोसाइटी रे हमरो केतेटा एज ए इंडिविजुअल वी शुड हैव सर्टेन गोल्स. What kind of goals? Culturally approved goals. Okay. आउ से goals को achieve करिवा पाई we should use legitimate means. जे
एई गोल्स गुडा को अचीव करिवा पई लेजिटिमेट मीन्स यूज करूची ताको हमें कोन कहबा सोसाइटी रे दे आर कन्फॉर्मिस्ट and those who are not adhering with this legitimate means we are going to say them what deviant okay they do not adhere with the legitimate means okay so एई जोडा तमे देखिबो जेतेबेले डिफरेंस क्रिएट हबो सोसाइटी रे एबे सोसाइटी रे नॉट एवरी इंडिविजुअल आर इक्वल गोटे सोसाइटी रे सब इक्वल की समस्तन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलिबा बोली एंती संभावना नाही not everyone are equal their access to opportunities are not equal तो सेथिरे कोन हबो गोटे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होची डिफरेंस क्रिएट होची सोसाइटी रे राइट एबे गोटे बिजनेसमैन रो छुआ तार लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउ तार लेवल ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ इज मच मोर हायर देन कंपेयर्ड टू ए son of a rickshaw puller right तांकर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलगा सेति बाई कोन होची तांकर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इज डिफरेंट तो सेतिरे कोन होची गोटे डिफरेंस क्रिएट होची गोटे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होची व्हिच इज लीडिंग टू व्हाट स्ट्रेन इन द सोसाइटी से स्ट्रेन को स्टडी करबा पई रॉबर्ट के मर्टन देले तांकर सबटु फेमस थ्योरी व्हिच इज नोन एज द स्ट्रेन थ्योरी ओके स्ट्रेन थ्योरी रो एटा गोटे तमरो माइंड मैप हिसाब रे मो एटा को नेची तो आमे डिस्कशन करिबा स्टेप बाय स्टेप तापर कोन हबो थोरे डिस्कशन कला परे ए पिक्चर ता देखिबा माने इजीली तुमको रिकॉल हो जिवो जहां भी आमे टॉपिक रे पढिजु राइट सो स्ट्रेन थ्योरी डकहाइम ऑब्जर्व करथिले सेटा देथिले अराउंड इन योर 1940s एग्जैक्ट ईयर तो मते मने नाही somewhere around 1940s रे strain theory देथिले one thing to remember strain theory views society also and also the individual macro plus micro perspective दुइटा यूज होची आ से रिसर्च कंडक्ट करिथिला बळे से both qualitative and quantitative method यूज करथिले एटा मने रखिथिबो ओके बेसिक्स So strain theory Merton देथिले somewhere around 1940s तांकर basis कोन थिला strain theory रो the rising crime rate in USA as he is a American sociologist तो से American society रे एते crime rate काहे की increase होची during the 1940s so सेटा को study करबा पई चाहथिले okay so at that time and even now even also today America रे गोटे predominant ideology थिला it was known as the American dream okay what is American dream can anyone say American dream कौन से जो लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस से जो लॉग sorry कैबिन टू व्हाइट हाउस सेटा कुछ नहीं what is American dream माने तुम individuals को गोटे again pushing towards their goals and their means to achieve it ता related थिला के कोई परिबो what is American dream Ma'am, to follow higher. yes one by one that means achieve anything by hard work merit basis Ma'am, higher. Ma'am, तुम वॉइस टा क्रैक होची कि जने कहलो achieving the goals through hard work and legitimate merit means okay basis again okay मैम American dream is basically माने it is giving equal opportunity to all the people if you work hard you will get success and money absolutely correct Ma'am, it was जोड़ा all तुम about actually democracy and polity and all. जोड़ा एबे प्रीवियसली जे कहले करेक्ट कहले फर्स्ट अमेरिकन ड्रीम से कहले गुड कल्चरल सिस्टम रे अमेरिका टा बेस्ड अछि दैट इज नोन एज अमेरिकन ड्रीम is a set of meritocratic principles someone said that I guess meritocratic principle कि irrespective of your class irrespective of your gender irrespective of your ethnicity whatever background you are coming from
in America the public will get equal opportunities to avail their dream or their goal. Okay, तो से goal टा कोन कोची कि every individuals in the society should pursue the goal of success, the ultimate goal of success. And what is that ultimate goal? Acquisition of wealth and what? Possession, material possession to be precise. Okay, acquisition of wealth and material possession. Materialistic सेथिबाई तमे देखिबो अमेरिका रे टिके कैपिटलिज्म तुमको प्रिडोमिनेंटली देखिबा को मिलिबो से माने काहे कि तांकर मटेरियलिस्टिक पोजीशन ऊपर बेसी फोकस करंती तांकर कल्चरल सिस्टम ही से ऊपर बेसिस है जा मर्टन कहले राइट सो material possession is your goal to achieve. Okay, so एटी कोन हला कैटेगराइज कर दिया गला that your goal is what? To achieve material possession and acquire wealth. And how are you going to do that? Through legitimate means. So this is your culturally prescribed goal. जोटा तमर legitimate goal कहा जाउची sorry मर्टन कहले तारो वर्ड कहले culturally prescribed goals. Okay, से culturally prescribed goals को तमे legitimate means रू achieve करिबो. Legitimate means here is education. Okay, hard work. जेतले तमे hard work और education through रू तमे goal achieve करिबा पई चेष्टा करूचो, then your rewards are what? This wealth and high income. These are your rewards. This is what American dream is based upon. Now, as I said earlier, the society is not divided, or the resources are not divided equally. Not everyone in the society is equal. जेतकी भी से माने meritocratic principles follow करिबा बोली कहिबे सेडा equally society रे follow करिबाटा impossible to do that, right? तो एडा कोन हला जेहेतु society रे some section of the society are able to easily follow this legitimate means of achieving the goals. On the contrary, there were certain section of the society who were not able to do that with the legitimate means. जोटा कि तमरा hard work through रू हला, education through रू से एटा achieve करी पारु न थिले. Okay, which is why what happened? This led to what? When gap or discrepancy between legitimate goal or the culturally prescribed goal and legitimate means of achieving it increases, deviance. it leads to strain in the society. कौन होची strain होची strain stress create करूची society रे तमे तमरो goal तुमको कहा वाला society रे एटा achieve करो बाकी तम पाखरे means से means through रो achieve करबा पई तम पई हेडा impossible हे जाउची. So it is causing what? Strain, stress in the society. Now the quality of education a upper class child can pursue is very different from the quality of education a lower class child will pursue, right? सेथिरे कोन हबो तांकर level of skill differ करिवो and what kind of jobs they are eligible सेटा differ करिवो आ जदि भलो job करूची तो easily ए goal टा achieve हे परिवो आ जदि करूनी then it will become very difficult, which will result into strain, stress create करिवो society रे, right? So Merton सेटा देखिला कहले कि से जतकी भी crime data USA रो crime data statistics को नेले जोड़ा इजिबो तमरो secondary data. Okay, से statistics गुड़ा को देखी कहले mostly criminal activities तुमको lower socio-economic section of the society रे देखिबा को मिलुची हला. Lower socio-economic section रे तमरो के petty thieves करूची कि कोठी stealing कर देला के robbery कर देला जहाँ भी criminal activities होची mostly you will see the lower socio-economic section of the society, people coming from that background are committing this. What is the reason for that? Reason कोन होची से माने चेष्टा कले कि केंती से ए legitimate means through रो achieve करिबा
tankara goal, culturally prescribed goal, but it was not possible for them. Poverty. Madam. Hello everyone, am I audible to all? Yes, ma'am. ଏବେ ଶୁଭିଲା। Okay, ଏଇଟା ତମର ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଇଶ୍ୟୁଜ ହଉଛି, ଟିକେ ମେ ବି ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ। let me share my slide again. Okay, so କୋଉଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ତମେ କୋଉ ପାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଡିବଲ ଥିଲା? ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। Okay, so I was telling that when gap and discrepancy increases in the society between the legitimate goal or the culturally prescribed goal and the legitimate means of achieving it, it leads to what? Strain in the society. Society is a strain cause koruchi. Okay, now in the society not everyone is equal. The access to opportunities of a upper class person is very different to the access to opportunities of a lower class person. They have access to very limited opportunities जे भी lower class ରୁ belong କରୁଛି, right? तो एबे जहाँ पाई resources enough अच्छी, opportunities enough अच्छी, से माने कौन हबो easily legitimate means को use करिकी से माने तांकर goal को achieve करी परिबे. On the contrary, जे माने lower class ରୁ belong କରୁଛନ୍ତି तांको पाई कौन हो जिवो ए सब जिंस achieve करिवा पाई बहुत difficult ही जिवो. Have I said that Merton को statistical data रो basis रे से एटा theory टा देथिले कहली कि मु एबे सुनी पारथिलो से word टा? Yeah, ma'am. Okay. Data. Okay, so okay मो ताहले बहुत कही देछ आ केतला stop हे जाइछ एटा. Well, let me repeat. तो एला strain काहे के cause हैला बुझलो? तो मर्टन ए सब जिंस को देखले कोन से ता पई यूज करले कोन क्राइम स्टैटिस्टिक्स. मैम द कॉस्ट कौन कहले? कोन सॉरी द कॉज कहा कॉज कोचो? ये जो स्ट्रेन हैला स्ट्रेन रो कॉज होची व्हेन देयर इज increase in the gap between the legitimate
goal and the legitimate means of achieving it. जेतले difference create होची, that is the cause, main cause. Okay. तो से crime statistics को देखिले of America, stats will लिखुछु. Okay. से crime statistics को study कले, which is your secondary data basically in a research. सेटा study करके देखिले that most of the crime जहाँ भी होची in American society, it is committed mostly by the lower socioeconomic background, people coming from the lower class लोक माने बहुत क्राइम करूचंती. सेटा जाय तमरो चोरी हे गला, डकैती हे गला, robbery, theft, जहाँ भी हला. Mostly who are doing this? People coming from the lower socioeconomic background. Okay. Why? As I said, for them, the access to opportunities are very limited. They do not have so much capacity to fund so much in the education. Education रे बेसी funding करिबाटा हला कि best of the best सब जिनस यूज करिबाटा हबा. तांको resources बहुत limited, तांको access to opportunities बहुत limited. तो सेति पय कोन होची तांको पय legitimate means through रो goal achieve करिबा पय difficult होची, which is leading to strain. तांको पय stress create करूची. एबे जे legitimate means use करिकी goal achieve करूचंती, they are called as conformist. आ जे करू नहांती, they are deviating towards different deviant behavior in the society. So ये जो trend the cause है due to the increasing gap between the legitimate means and the legitimate goal. सेटा को achieve करिबा पाई Merton कहले ता पाई 5 adaptive responses अछि, through which the individuals adapt with this strain, right? Stress सहित केंती adapt करूचंती. There are 5 adaptive responses. So what are they? First one is your conformity. Okay. Then innovation, ritualism, retreatism, and last one is rebellion. M each N habo. Okay. So what is conformity? Conformity mane kono? Ma'am, they have access to the legitimate means. both goals and means. Absolutely correct. जे कोन करछि accept करूछि both legitimate means, LM करूछि हला legitimate means, and the culturally prescribed goals, CG लिखुछि. Okay. What about the innovation part? Innovist. जे accept cultural करूछि goals accept करूछन्ते किंतु institutional means नै त से माने किछि innovation करे कि से cultural goal को achieve करूछन्ते. Exactly. तो से माने कोन होछि cultural goals को कोन करूछन्ती accept करूछन्ती, right? But legitimate means को कोन करूछन्ती reject करूछन्ती. आउ ritualist एमाने कोन करिवे? Ma'am, legitimate एमाने means को means accept करछन्ती but goal को accept करना. Okay, correct. So से माने goal को reject करूछन्ती किंतु means, legitimate means को accept करूछन्ती. Then retreatist, so both reject करछन्ती. they are rejecting both. And last one, rebellion. New means and new both goals. को reject करे कि नुआ cultural goal और institutional means create करूछन्ते. So they are basically replacing. So माने replace करूछन्ती both को. Culturally goals, accepted goals या फिर prescribed goals को भी replace करूछन्ती. आउ तार legitimate means को भी replace करूछन्ती. So we can easily understand this with this diagram. Okay. So conformity means they are accepting both the goals and means. Innovation is accepting the goals but rejecting the means. Ritualist, they are rejecting the goals but accepting the means. Retreatist कोन होची
rejecting both the goals and means, and rebellion रे ସେମାନେ तो replace कर दउचंती पूरा completely replace करूचंती. Okay, so मॉर्टन कहिथिले except from conformist को छाड़ी देले बाकी जो 4 adaptive response they are anomic in nature. Okay, these 4 adaptive responses other than conformity they are anomic in nature. आउ जो last response तमर rebellion सेटा गोटे सोसाइटी रो ऑर्डर बाहर अछि. Okay, he said that it is out of the order of society. Now tell me what is the example of conformity. Easy example जे education गोटे student जे education नेला तापरे for example हमें गोटे medical student रो example नेबा से तार +2 भल से क्लियर कला +2 क्लियर कला परे से properly पढ़ी की कोचिंग मे भी कोचिंग नहीं की से MBBS नीट एग्जाम टा क्लियर कला तापरे से MBBS पई एलिजिबल है कि now he or she is a doctor. That is the conformity. से legitimate means को भी follow करिला गोल को भी follow करिला डॉक्टर हला तो सेबे कोन हबो से इनकम भी एक्वायर करिवो वेल्थ भी एक्वायर करिवो ओवरऑली सोसाइटी तरफ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करिवो. That is conformist. Innovation तार एग्जांपल कोन साइंटिस्ट Smuggler, human ନୂଆ trafficker. ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଦେଖିପାରିବା ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଷ୍ଟିଭ ଜବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମିନ୍ସ ନଥିଲା ବଟ୍ କଲଚରାଲ ଗୋଲ ଥିଲା ତ ସେ ଆପଲ କ୍ରିଏଟ କଲେ ପିକ୍ସାର କ୍ରିଏଟ कले. ओके परफेक्ट. सो इनोवेस्ट माने कोन देखो से माने कल्चरली एक्सेप्टेड जो प्रेस्क्राइब गोल्स को एक्सेप्ट करचंती किंतु लेजिटिमेट मीन्स को रिजेक्ट करचंती आ ता जगह रे कोन करचंती कि छोटा अनकन्वेंशनल मेथड को अप्लाई करचंती. सेथिरे तमे कहलो जेंते स्टीव जॉब हला तापरे साइंटिस्ट हले philosophers hale Galileo Galilei Karl Marx all these people will come under this category. Okay, scientists, philosophers, tapare Karl Marx, Steve Jobs, etc. Smuggler Okay, भी करिवे. Smuggler. Smuggler tomorrow mostly I will say retreatist बेसी fit हेबे. मैम क्रिमिनल्स भी तो हबे ना तो से भी गोटे टाइप रो स्मगलर भी नहीं से माने रिट्रीटिस्ट रे बेसी फिट हेबे. ओके बिकॉज से माने कोन एटा देखो अनकन्वेंशनल मेथड नॉट नेसेसरीली ऑलवेज डेविएंट. सोसाइटी इनिशियली ताको एक्सेप्टेंस न दोथुबो बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल एक्सेप्ट इट. तो नेगेटिव अनकन्वेंशनल मेथड नेगेटिव हेबार माने नाही बट जेतले तमे रिजेक्ट माने तमरो स्मगलर ही गले ड्रगिस्ट ही गले ए माने कोन होची से माने कंप्लीटली नेगेटिव वे रे जाउचंती. सो वी कैन टेक retreatist as an example here. तम retreatist स्मगलर और ड्रग एडिक्ट्स मन को एग्जांपल नहीं परिबा. ओके ओके तो एटा ही वाला retreatist रो एग्जांपल. रिचुअलिस्ट की हेबे ब्यूरोक्रेट्स. yes how bureaucrats are example. से गोटे प्रोसेस रे बंधा थांती तो से माने कोन करचे ती तांको जो ब्यूरोक्रेट्स मोस्टली से माने देखिबो तांगर एठी रेड टेपिज्म बोली गोटे कांसेप्ट जानथिबो. आई होप सो यू नो दैट. रेड टेपिज्म बिसर जानछो ना. यस तो मैम माने Delaying in the बहुत processes. बहुत टीडियस प्रोसेस फॉलो करिवे पेपर वर्क ऊपर पेपर वर्क करिवे आ सब जिंस को कॉम्प्लिकेट करिवे जहां भी जंती रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब रे अछि सब करिवे. सेटा करू करू कोन हो जाउछि स्ट्रिंजेंट adherence to rules and regulations. It somehow neglects their culturally prescribed goals. Okay, so bureaucrats are not can be an example of it. Okay, tapare rebellion रे की आसीबे I'm terrorist. terrorist हां आउ फ्रीडम nationalites. मैम ଭଲ एग्जांपल भी थाई परिबा लाइक मार्टिन लूथर किंग
some Martin social Luther King, reformers. हाँ social जल्दी से reformers. हाँ reformers Yes, social reformers. ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ବି ଆସିବେ ଆଉ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ବି ଆସିବ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଇ ଗେସ୍ ଯେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟଲି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ and it helped people come together and protest against the Roman Catholic Church ତା ଥ୍ରୁରୁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଆଜି କା ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ୍ସ ଦେଖୁଛ they have come from that reformation only प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रो आरंभ हेतिला सेटा सो मार्टिन लूथर किंग एंड मार्टिन लूथर जर्मनी रो गुटे जने से थिले बोथ आर rebellion we can say here so these are the adaptive responses okay last is the reference group रे कोन हबो reference group जंती कि हमें डिस्कशन कला मु एडा तुम नोट्स प्रोवाइड करथिली गोटे बैच रो सेथुरु मु तुमको एतडा एटा हम डिस्कशन करबा रेफरेंस ग्रुप थ्रू दैट ओनली ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रेफरेंस ग्रुप माने किए कोन राइट जस्ट इटरे इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा को मु तुमको कहि देबी reference group is one which you always refer in order to evaluate your achievements, your role performance, your aspiration and ambition. Okay? And one might say that the membership group to which you belong are your reference group. Seda bhi he paribo. And also the non-membership groups, the groups to which you do not belong may act like a reference group. Membership group re ki hebe? मेंबरशिप ग्रुप रे तमरो फैमिली मेंबर्स हेबे मेंबरशिप ग्रुप रे एबे जदि तम एग्जांपल लेबा देन अदर एस्पिरेंट्स इन योर ग्रुप ओके दे कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर एग्जांपल के जने इंटरव्यू लेवल तक गला ए एस्पिरेंट हैज रीच्ड अप टू द इंटरव्यू लेवल ऑफ द ओपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सो दे कैन एक्ट लाइक अ एस्पिरेशन फॉर यू कि मु भी आपको जेके एंती करिवि एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप रे के हेबे the bureaucrats, the officers who are now serving in the civil services, but you are not in their group now. You are aspiring to be the part of their group. Okay? और सेथिरे कोन हबो तमे तांकर way of talking, तांकर way of behaving, तांकर actions, तांकर day to day lifestyle को धीरे धीरे adopt करबा को चेष्टा करिवो. Right? तमे से adopt करबा को चेष्टा करले कोन हबो सेडा तमे देखुथबो mostly it is very popular among the civil services aspirant that think like officer को जाउची right officer पूर्व हेबा रु पूर्वरु तमे officer एंती qualities तम भितर रहबा दरकार तो सेमते तमे think like officer act like officer को जाउची सेडा कोन को जाय that term what the term Merton said for that enacting the aspirational group or the aspirational individual सेडा कोन को जिवो Anticipatory socialization. Absolutely. Anticipatory socialization. जेतले तमे तमरो रेफरेंस ग्रुप या फिर रेफरेंस इंडिविजुअल भलिया तमे एक्ट करिवाटा स्टार्ट करिवो तांको एनेक्ट करिवाटा तांको तांकर वे ऑफ लिविंग को तमे कॉपी तो गुटे खराब वर्ड हिजो फॉलो करिवाटा चेष्टा करिवो दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन नाउ व्हाई पीपल start to doing so what is the reason kon Plus prestige to show off to haboni but to be jente tome part of the membership group हाँ yes first to ijo jente tome कहलो कि टिके तम status improve हे परिबो okay तमरो then relative deprivation मैम हां सेटा हमें जिबा relative deprivation को जिबा आइडेंटिफिकेशन भी आसे जिवो सबरे relative deprivation को जिबा but anticipatory socialization why we are doing first thing is that amar टिके status टिके better हबो value टिके increase हबो आ secondly कोन हबो जेताले तमे आकु जाय कि जेताले से ग्रुप रो पार्ट हे जिवो फॉर एग्जांपल तमे आगु को जाय कि तमे गुटे OAS ऑफिसर हे गलो किंबा IAS ऑफिसर हे गलो
तो से ग्रुप रे तमे इजीली फिट हे परिबो से ग्रुप रे इजीली तुमको एक्सेप्ट करिवे जदी पूर्वरो तुम पाखे से क्वालिटीज अछि ओके आउ तापरे जेंति के तमे कहलो मर्टन कहले ए जो रेफरेंस ग्रुप रो जो अराइज होची why it is arising it is because of relative deprivation Deprivation. what is relative deprivation এটা ওটা ইকোনমিক্স রু আসিছে হলা এই টার্মটা ইকোনমিক্স রু আসিছে relative deprivation so what is relative deprivation ଆମେ ଯେବେ କମ୍ପେୟାରିଂ କରିଦବା ନିଜ କାମକୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଦବା ସେତେବେଳେ तो कंपेयर कले कोन होचे Ma'am, lack of resources. Ma'am, it's understanding the role of perceived inequalities. okay understanding the perceived inequalities okay Inequality fine in social life. in social life okay आउ आगे किछ कहि पारबो ऐड करिवो एनीथिंग मोर relative deprivation is basically comparison is theft of joy कहा जाउची राइट सेटा शर्मा जी का बेटा बर्मा जी का बेटा गुटे तुम बहुत एडवर्टाइजमेंट रे देखिथिबो शर्मा जी गाड़ी किनिले तो मु भी गुटे गाड़ी किनी पकेबी मु भी गुटे कार किनी पकेबी तापरे शर्मा जी किनिबे गुटे मर्सिडीज किनी पकेले अच्छा शर्मा जी मर्सिडीज किनी पकेले मु ताले बीएमडब्ल्यू किनी पकेबी शर्मा जी गुटे मुंबई रे गुटे फ्लैट किनी पकेले शर्मा जी फ्लैट टे किनी पकेले अच्छा मु तो पूरा गुटे अपार्टमेंट किनी पकेबी तो दिस इज व्हाट deprivation the constant feeling that you are lacking okay you are lacking from others this gives rise to deprivation relative deprivation you are comparing और तुमको लागू कि तमे lack करूचो that is relative deprivation which further give rise to your formation of reference group और से relative deprivation through री तमे identify करूचो कि okay this is going to be my reference group or this is going to be my reference individual why are you aspiring or you're looking up to a civil service aspirant kahi ki tome tanku gute aspiring way re dekhucho why what is the reason can anyone say part of that group why do you want to be the part of that group ସେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିବ ରିକଗ୍ନିସନ मैम सोशल एप्रिसिएशन सोसाइटी रो Could you please एप्रिसिएशन से repeat the जिनसटा question again? आसपार होइथिरे okay so basically kono they have something that you don't have सेथि पाए तमे status तो okay that will come with it but they have something that you don't have which is why you want to be like them they have the power to make a change in the society they have the respect and dignity in the society which you also aspire to have in your life yes or no a primary reason is that यस मैम right and if you have that power you are seeing around you कि एंती सब जिंस बहुत प्रॉब्लम्स होची सोसाइटी रे जदि से पावर मते मिलिला सेंती पावर तो मु सोसाइटी रे चेंज आनिबा को चाहूची किबा चेंज आनी पारिबी that is why you are doing it so we identify someone as our reference group or reference individual by seeing that something they have is lacking in us तांको पाखरे किछु उटा अछि जोडा हम पाखरे नाही ओके सो दिस इज रेफरेंस ग्रुप तो एबे इंपोर्टेंट टॉपिक्स जेतकी हला हमें मोस्टली कवर करि दैछु हमें देखिबा केतडा क्वेश्चंस ओके we'll see some question we'll start with this one critically analyze Merton's strain theory okay सेठरो हमें स्टार्ट करिबा तो a question को आंसर करबा पई I will give you 3 minutes alright 3 minutes रे तमे कोन मते 5 important points कहबो काहे कि एबे हमें बसी कि पूरा 150 words रो आंसर लिखिबा माने that is not possible already we are running short of time तमे जत्ते बळे भी इवन प्रिपरेशन करू जो तम मेंस पई keep one thing in mind there is so much of topic in your syllabus एबे गुटे गुटे टॉपिक रो म बसी कि मेंस आंसर राइटिंग रो जहां भी म आंसर लिखि सब को मने रखिबी इट इज नॉट पॉसिबल ओके तो सब टॉपिक रो तमे इंपोर्टेंट पॉइंट्स माने ए पॉइंट्स ता जंतु मु छाडी बिनी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सेटा लिखिबाटा एसेंशियल से पॉइंट्स इफ आई स्किप दैट पॉइंट्स देन आई विल नॉट गेट गुड स्कोर बेसिकली दैट नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स सेटा लिखिबाटा बाध्य तो सेंती 3-4टा पॉइंट्स जदि तमे मने रखुचो सब टॉपिक रो स्ट्रिंग थ्योरी हला
तम रिलेटिव डेप्रिवेशन हला रेफरेंस ग्रुप हला लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन हला तो सेंते जदि तुमे केतेडा पॉइंट जदि मने रखुचो बाकी जहाँ भी एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स तुम निजे ऐड करि परिबो सेतकी तो तुम नॉलेज एबे हे गलानी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स व्हाट यू नीड नाउ इज हैविंग प्रिपेयर्ड तुम बिफोर हैंड प्रिपेयर करिबो सब टॉपिक्स रो 3 to 5 important points that is essential for you to write जदि से रिलेटेड क्वेश्चन आसिला तो मु ए पॉइंट्स गुडा को बाध्य लिखिबी okay so I am giving you 3 minutes time critically analyze Morton's strain theory तमे कोन पॉइंट्स कहबो okay we will discuss that think about it note your points down and then raise your hands and one by one we will discuss सेतरे तुम raise your hand option गुटे थिबो देखो जूम रे अछि ना जार हे गला से raise your hand option टा क्लिक करिवो okay fine clear everyone okay done everyone shall we start Yes, ma'am. start okay so तमर इंट्रोडक्शन रे कोन रहइबो फर्स्ट इंट्रो पार्ट रे कोन रहइबो how you will The introduce book, the social theory and social structure, he explained about the strain theory and conformity and deviance. okay so you will tell first Robert के Merton first जिंसो कोडा मु कहिथिली बुक रो ना टिके ऐड करबा को चेष्टा करिवो ओके तो स्ट्रेन थ्योरी तांकर फुल एनालिसिस ता से देइथिले तांको बुक रो ना हला सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी सेटा बुक नहीं एक्चुअली सेटा गोटे बुक रे पब्लिश हेतिला सेटा आर्टिकल थिला आई गेस ओके 1938 गोटे आर्टिकल थिला है ना सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी रे स्ट्रेन थ्योरी विषय रे से फर्स्ट कहिथिले आ सेतरे तमे कहबो कि काई कि स्ट्रेन थ्योरी होजी कॉज कि when there is a gap between okay your socially or culturally prescribed goals and the legitimate means of achieving it leads to strain in the society और जहाँ जहाँ हमें discussion करना you will write that in the intro part now the core element will come in here okay or the body so कौन मैम criticism the body होल्ड मैम होल्ड ये जो लिखी छी क्रिटिकली एनालाइज एथरे हमको कोन लिखिबार अछि पॉजिटिव या नेगेटिव लिखिबार अछि critically analyze कहछ ना तो तुम criticize करिवो ता ओनली theory रो कोन drawbacks कोन कहिवो ओनली बस yes only drawbacks critically analyze माने only drawbacks कहबो you will just tell what is the theory is all about आ तारो problems कोन रहला drawbacks कोन रहला okay आज्ञा so what are the drawbacks again ए मेन पार्ट रे तुम से drawbacks रा कहबो तुम थरे इंट्रोड्यूस करि सारला परे टॉपिक कोन now you will tell the drawbacks limitations yes Ignoring white collar crimes. ignoring White collar crimes. white collar crimes okay सेथरे जंती तुमे एग्जांपल दियो white collar crimes रे कोन आसीबो
like you can call it Ma'am, cyber crime, digital arrest. digital art. Oh, Corporate okay, white. fraud, ma'am. ମ୍ୟାମ୍ Corporate. मेन तो I होची was स्ट्रेन थ्योरी टा ओनली अमेरिकन सोसाइटी को देखिके दिया है इट मे और मे नॉट बी अप्लाई टू अदर सोसाइटीज ओके ओके फाइन सेटा भी गोटे पॉइंट हला फर्स्ट पॉइंट जोड़ा कहले मु सेटा लिखुची कॉर्पोरेट क्राइम्स हे गला आउ प्लस तमरो सीरियस क्राइम्स जेत की भी रेप हे गला मर्डर हे गला ता रिलेटेड किछि मटन कहि नहांती किछि एक्सप्लेनेशन देई नहांती कि सेटा को कैटेगरी रे से माने रखिबे ओके व्हाई you said that only lower socioeconomic people are doing this why we are seeing people from higher socioeconomic background doing so why they are committing crime he didn't explain anything tapare next point ta kono thila se america ro data nele तार क्रिमिनल डाटा नेले आ सेटा को से जनरलाइज करबा को चेष्टा करचंती व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द सोसाइटी ओके henceforth it is not applicable to all the society आउ मैम एथरे lack of opportunity होबो lack of opportunity केंती मैम जेतेबेले गैप आसी जे जाउछि ना एटा भी गोटे मार्जिनलाइज सेक्शन पे गोटे अपॉर्चुनिटी आसुनी माने क्लास बेस्ड अच्छा डिस्क्रिमिनेशन तमे एटा कोइ परिबो in this point you can say this कि meritocratic principles ऊपर based हिची बोली से कहले but not everyone in the society is equal okay so that part of the problem he did not address you can say that आउ कोन मैम हावर्ड बेकरଙ୍କର ଅଛି लेबल्ड माने ऑलरेडी हमें जदि गोटे ग्रुप को लेबल्ड करि दउछु ताले सोसाइटी से अनुसार तांको परसीव करे आ तांको बिहेवियर भी चेंज हे जाय ओके लेवलिंग थ्योरी कथा कहजो तमे हां यस लेबलिंग थ्योरी रो भी तमे एटा यूज करी के एक्सप्लेनेशन दे परिबो क्रिटिसिज्म करि परिबो ओके मैम सेठी गोटा हमें यूज करि परिबा रिट्रिस्ट ऊपर हां ओके जंती एग्जांपल दियो हमें कथा हेतला ना जो माने ड्रग एडिक्ट से जो माने कल्चरल गोल्स एंड से जो नॉट फॉलो करी कि जो माने जानते आगु नहीं सेटा तमे केंती क्रिटिसाइज करिवो यूजिंग स्ट्रेन थ्योरी सेटा यूज करके तमे केंती क्रिटिसाइज करिवो एटी मेन प्रॉब्लम देखो से कैटेगरी तो करि देले पांचटा कैटेगरी 5 एडॉप्टिव रेस्पॉन्सेस बट इन रियल लाइफ द सोसाइटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स you cannot categorize that in these 5 categories these people will come under here you will often see that a person can come in more than one category overlapping भी हे परिबो okay so that will create more confusion से जिनस को एड्रेस करना अंती एतकी भी तो सिंपलीफाई करी हेबनी कहारो वर्क किंबा कहारो गोल को so Ma'am, lack of empiricism. lack of empiricism हमें ऑब्जेक्टिवली से ताको किछि मेजर करि परिबनी okay that can be also so एटा तमरो हे गला बॉडी तम क्रिटिकली एनालाइज कलो ताकू कंक्लूजन रे कोन रखिबो कंक्लूजन रे कोन रखिबो but how you will conclude this कंक्लूजन रे तमे बेसिकली कहबो कि माने एटा को जस्ट दे देबो कि एंते एंते ड्रॉबैक्स अछि but still his theory is applicable in a lot of way तार गुटे एग्जांपल दैट इज कंक्लूजन तो लाइक दैट कि किछि कोइ परिबो कंक्लूजन मैम हमें किछि मेजर से कि कंक्लूजन को एंड कर परिबो yes you can also do always no doubt this is a critically analyze वाला क्वेश्चन नेगेटिवली तमे ताकू माने तार ड्रॉबैक्स को जो बट सब बळे एंडिंग ताकू टिके पॉजिटिव नोट रे एंड करिबाटे ही ऑलवेज बेटर okay so you can do that also measure भी तमे इंक्लूड करि परिबो so हां कह कोन कंक्लूजन रखिबो constitutional significance नहीं परिबा एते गवर्नमेंट मेजर्स भी नहीं परिबा कि अफर्मेटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ला अछि रूल ऑफ लॉ yes rule of law So study of crime Ma'am, patterns welfare activities okay सेटा तमे कहि परिबो that
ଯେତିକି ବି lower socio-economic background ର ଲୋକ, not everyone are deviant in nature, and even government is coming up with welfare schemes ଯାହା through ସେମାନଙ୍କୁ opportunities ମିଳୁଛି to follow the legitimate means and achieve the culturally prescribed goals, right? You can use that also. Religion ର ବି example ଦେଇପାରିବେ। କେମିତି? ଗୋଟେ କାର୍ଲ ପପର ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ ଗୋଟେ ଆଣିପାରେ। ଓକେ, ହଁ କାର୍ଲ ପପର ସେଇଟା ତମେ କହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଯାହା ବି କହିବ ବଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ତମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବ। ସୋ ବେସିକାଲି ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦ ଜିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଟା ଗୋଟେ କରିବା। which one should we do? Latent manifest function ଏଟା ତ ଜାଣିଲ। ଏଇଟା କରିବା। I have taken 4 questions but time ହେବନି। This is the last one, let's do. I'm giving you again 3 minutes. What is the difference between the concept of anomie given by Merton and Durkheim? I'm giving you 3 minutes. How you will introduce, what is going to be the main body, and how you are going to conclude. That you have to tell me, okay? Okay. Done, everyone? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So how are you going to introduce? Introduction ରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଇଟା? Ma'am, definitional approach ଯଦି ନବା enemy ର Okay. First ତ ତମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, anomie, the concept of anomie has been given by Emile Durkheim. Okay. Durkheim, Emile ତ Durkheim ସେ book name mention ହବ। ହଁ, ସେ word ଆସିଥିଲା nomos, ସେଇଟା ବୋଲି mention କରିବ। Durkheim ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ Okay. ଯୋଉ work division of labor in society ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଆଉ ତାପରେ what is the Durkheim's concept of anomie କ'ଣ? Durkheim କ'ଣ କହୁଥିଲେ anomie ବିଷୟରେ? Change of rapid social changes in the society. Okay. Between society and a legitimate Due goal. to the lack of social cohesion and solidarity.
ने causes सेटा enemy. एनोमी रो रीजन सेटा हिजबो जो एनोमी କହିଥିଲେ first ରୁ transition Durkheim କହିଥିଲେ it is a state of normlessness. Durkheim କହିଥିଲେ simply that it is a state of normlessness and it also occurs due to rapid social change in the society. ସେଥିରେ ତମର sudden progress ହେଇଯିବ କିମ୍ବା sudden economic କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ downfall ହେଇଯିବ society ର. That can also lead to enemy. Okay, Enemy. right? ସେଟା ମାନେ ହେଇଗଲା ତମର Durkheim ସେ economic base ରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି. economic basis ତମେ economic depression ଯେମିତି କହିଲି right? ତ ସେଟା ତମେ ଆଗ କହିବ Durkheim ର concept of enemy. ସେଟା ଦେଇଦେଲ. Next Morton को କହିଥିଲେ Ma'am, Morton defined anomy as the gap between culturally defined goal and legitimate goal. yes तो से कोन कहले से एनोमी को फोकस करिले कि सेटा केंती तमरो strain cause करूची how strain is caused because of the gap between the culturally prescribed goals and the legitimate means to achieve it right आ सेटा मोस्टली से कोन करजंती अमेरिकन सोसाइटी रो सब वैल्यूज आ जहाँ भी तांको डाटा आ तांको रिसर्च अमेरिकन वैल्यू सिस्टम ऊपर से माने बेस्ड करछन राइट से अमेरिकन ड्रीम रिलेटेड से सब जिंस रो इंस्पायर है कि से थ्योरीटा देथिले okay now in body the best way you can do is you can make a division like this okay and the division create करिकी गोटे साइड रे कारोड ऑडियो Ma'am, ऑन अछि previous ମ୍ୟାମ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସାର୍ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଲେଖିବନି ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଖରାପ ହବ ଯେ ଏଟା 10th କ୍ଲାସ୍ ର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଟାଇପ୍ ର ଲାଗିବ। I don't think so. Maybe देखो से क्रैक करचंती that can work but मो not only OPSC but both to UPSC माने जे भी क्रैक करचंती टॉपर्स रो भी आंसर लिखि से माने ती फ्लो चार्ट और डिवीजन करके लिखुतिले so maybe मैम जनरली डिफरेंस रे तो एटा ही प्रेस्क्राइब करा हुए कि मझिरे माने पार्टीशन करके लिखिबा हाँ पई तमे जहाँ भी टू शो explain द कर डिफरेंसेस इन बेटर वे हाँ तुम आंसर टा प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होची ना तुम जतले फ्लो चार्ट्स बनाउचो किंबा टिके माइंड मैप्स देलो कि एंता डिफरेंस कलो माने instantly तमे तुम्हारे पॉइंट्स गुडा को सेठी प्रोजेक्ट करि पारुचो राइट so I have seen many toppers also doing that UPSC toppers OPSC toppers maybe sir ro perspective be I am not saying that he is wrong entirely wrong but I don't think so this is also incorrect to do but okay that is up to you सेटा तो तमो ऊपर रहला but Okay, ma'am. let's now get into the main body so तमे differentiate केंती करि पारिबो most एटा मो एठी लिखली Durkheim आ एठी लिखली Morton तंगो पॉइंट ऑफ व्यू Durkheim से सब बड़ा सोसाइटी को बेसी फोकस करथिले राइट से मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव को देखुथिले कंपेयरिंग टू Morton से बोथ माइक्रो प्लस मैक्रो पर्सपेक्टिव देखुथिले ऑलराइट so he said that this is all about normlessness in the society and also rapid social change in the society he said it is the strain between goals and means legitimate goals and means okay ସେଡ଼ାଇ ଗଲା ଆଉ କଣ ହବ यारो ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ କହିପାରିବା ଯେ ଡରଖିମ୍ ଏଟାକୁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କନସିଡର କରିଥିଲେ ଆନୋମିଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ମର୍ଟନ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫେନୋମେନା ହିସାବରେ କନସିଡର କରିଛନ୍ତି। यस ସେଟା ବି କହି ପାରିବ ओके ଆଉ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ହିସାବରେ ସେ କନସିଡର କରିଥିଲେ ଓକେ करेक्ट यार कॉज कोन हबो ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ କହିପାରିବା ଯେ यस हेलो ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା सोसाइटी रे ଆନୋମିଟା ଡରଖେମଙ୍କ ହିସାବରେ सोसाइटी रे ଏଟା टेम्परारी रही परिबो कारण यार सॉल्यूशन ଆମେ काढी परिबा जे जेमति कि माने कोड ऑफ एथिक्स हो इंटीग्रेटेड विथ सोसाइटी हो हां सेटा आउटकम रे जिबा ओके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन ओके तो लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ कोन तांकर इंटेंट हमें देखिला ना कॉज कोन हबो डरखाइम कोन कॉज कहिथिले
rapid social change transition tapare period. weak regulation in the society ଆଉ କଣ ହବ Transition period. ହଁ ସେ rapid social change ରେ ପଳେଇବ ସେ Weakening transition of period collective conscience. Sorry? Can we say weakening of collective conscience? Weakening Yes. of collective conscience. when our Industrialization. breakdown of collective conscience okay ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହବ ମଟନ କଣ କହିଥିଲେ cause କଣ ହବ ଏଟା Limited access to legitimate means to achieve Yes, culturally accepted goals. unequal opportunity or as you said limited access to means okay our overemphasis on success tomorrow American dream material possession related okay so यार outcome है कौन what is the outcome now of the enemy according to Durkheim and according to Merton social solidarity भांगी जीवो social disintegration lead करिवो आउ कोन हबो Forced division of labor है पर. yes forced division of labor आउ से तमरो suicide related कहउथलो ना explain करथलो yes we can put that point here yes or no Yes ma'am. so suicide related point से explain करथले सेतले we can put that point here and what about Merton's idea of the outcome of enemy Strain, structural strain होगा. structural strain तो सेटा तार cause आउ तार एटा इन माने एठे पळेला Ma'am, outcome टा deviant. कोन yes deviance in the society okay जोडा के तुम कोन करबो तुम social structure ऊपर सेटा impact करिवो social structure को खराब करिवो dysfunction हबो society रे okay it will lead to dysfunction in the society so this is the main part now conclusion ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ପଜିଟିଭ ରେ ବି ହେଇ sorry ମ୍ୟାମ କହିଲି ବି ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଯେ ଇନୋଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ବୋଲି କି କୋଥିରେ ମଟନ ରେ କହୁଛ ମଟନକର ଆଜ୍ଞା yes ମୁଁ ଖାଲି ଉପରୁ ମୁଁ top ରେ point लिखुଛି additional points also you can add okay it is not possible for me to write so many points ଆଜ୍ଞା altogether that is also is correct okay सेटा भी लिखि परिबो तो yes conclude केंति करिवो how you will conclude दी जण both holds significance in the current society कहि परिबा हम. दी जणकर theory both the ideas of enemy hold a great significance in the society where Durkheim's idea of enemy is all about the moral vacuum in the society जेतले rules regulation false follow होनी society गोटे systematically order रे चालुनी गोटे moral vacuum जेतले create होची society रे that is leading to what enemy okay whereas तमरो Merton कोन कहउचंती he is talking about the structural imbalance केंती होची आ जहा भी Durkheim रो आइडिया ऑफ एनोमी थिला सेडा को सेटी के अमेरिकनाइज्ड कर देचंती राइट थैंक यू सर अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करी कि तांकर थ्योरीटा देले सो his idea of enemy is basically Americanized version of Durkheim ideas of enemy that we can say right so both the ideas are applicable in the society especially Merton's idea is more applicable in the capitalistic society रे हमें एटा करि परिबा कि नै इवन Durkheim रो आइडिया बे तमे देखिबो हमें जंती सुसाइड रो एग्जांपल नेबा
तो तुमरो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड आ वेरियस टाइप्स ऑफ सुसाइड रो नै कि केंति मॉडर्न डे रे इट लीड्स टू सुसाइड तुम सेटा भी तुम कहि परिबो हाउ मॉडर्न डे एप्लीकेशन तारो एनोमी रो फॉर द रेस्पेक्टिव थिंकर्स केंति तुम अप्लाई करि परिबो दैट यू कैन गिव इन द एप्लीकेशन ओके सेटा तुम कंक्लूजन दे परिबो राइट सो these are the two questions that we got the time to discuss. Two more were there, but you can, I think you can easily do it on your own. So that you easily kori paribo with all the concept that we have discussed. These were the things that I found important to discuss, so we did. So any doubts? Kahaku kichi doubt? मैडम आज जो पूर्व क्वेश्चन टा में डिस्कस करले कि क्रिटिकली एग्जामिन सेतरे मैडम आ किछि एक्सप्लेन करिया पड़िबो ने हम जो चारिटा अछि जो डेविएंस बिहेवियर जो हमर इनोवेशन सेटा तो हमर लेंथ ऑफ क्वेश्चन ऊपर डिपेंड कला आ तमे सेटा केंति फिट करिवो से क्वेश्चन भितरे डिफरेंट एडेप्टिव रेस्पोंसेस को तमे खाली डायरेक्टली लिखि देले हबो काहेकि सेटा तमे बे बसी के सब को एक्सप्लेन करबा को चेष्टा करिवो देन योर आंसर विल गेट वेरी लेंथी और तमे टिके डाइवर्ट ही जीवो तो बेटर कि जेंति जणे कि कहले रिट्रिटिस्ट रो एग्जांपल देबा बोली तो से गोटे पर्टिकुलर एडेप्टिव रेस्पॉन्स रो एग्जांपल देखि तमे इलैबोरेट कर दो दैट इज मच मोर बेटर नले बहुत लेंथी ही जीवो अननेसेसरीली आंसर ओके एंड एनीबॉडी एल्स आउ काकू किछि डाउट समस्त को बुझा पड़ला तो जहां भी हमें आज डिस्कशन कला आ जतकी तमे पढिथिलो सब टिके रिकॉल हैला आई होप मने पड़ला टिके Yes, Okay. ma'am. Okay, I hope there are no more doubts. If not, then shall we wrap it up, everyone? Yes, We'll ma'am. meet Yes, again. ma'am. We'll meet again on our next class, maybe on 5th or 6th. Okay. So thank you Okay, so much for joining in. You Thank keep you, ma'am. Thank you, ma'am. keep revising. Thank you, ma'am. Obviously, we'll do better. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. सुज्ञानी और सुचरिता महेश आज्ञा मैम तमे होस्ट रे जाइछो मु भूल रे लीव मीटिंग मार देली लीव मीटिंग फॉर ऑल कर दियो तो नाले एटा बंद हेबनी लीव मीटिंग फॉर ऑल कर दियो आज्ञा नाले मते होस्ट कर दियो